In this video, we are going to cover Venn diagrams through deductive and inductive logic. In RBI Grade B examination, a total of 4 to 5 questions are asked belonging to Venn diagrams, and all of them use the reasoning of deductive and inductive logic. We'll understand what exactly is the meaning of deductive and inductive logic first. Then we'll move on to certain important points which we need to remember in order to get these questions right. A total of 4 combinations have been made by me which cover the entire Venn diagrams based questions which are asked in RBI examination. We'll understand how those 4 combinations work. Then we'll move to common mistakes we'll make while they're solving these kind of questions. And we'll understand the entire theoretical framework through certain practice questions. Let's come to deductive logic first. In deductive logic, we move from general to specific. What this means is that we make certain general statements first, which are theory based statements which are theoretical in nature and very general, and from them we move to certain specific observations, or we make certain specific observations which apply in that particular situation. So we are moving from theories to specific observations. Let's take an example to understand this. All men are mortal. This is statement 1. Statement 2 says Harold is a man. So statement 3, which will be an observation based on these two statements, will say that Harold is mortal. So as you can see that these are general statements based on which we have arrived at a specific observation or a specific statement. This is called as deductive logic. In this we are moving from theory to specific observations, whereas when we talk about deductive logic, then the entire idea of deductive logic is turned around. So we are moving from specific observations to theories or general statements in an inductive logic. We'll understand that as well through an example. So in an inductive logic, we are moving from specific to general and from observations to theories. Now an important thing to understand here is that in RBI examination, most of the questions belong to the area of deductive logic. Inductive logic is very hardly or very rarely used in the examination. So we need to understand that whenever we are solving a question, we are moving from general statements to a specific observation. For example, we can say that Harold is bald and Harold is a grandfather. So a general statement which can be made from these two statements can be that all bald men are grandfathers. So this is not a very exact or an accurate example, but this shows that we are moving from specific observations to general statements which says that all bald men are grandfathers. So this is what is inductive logic. Inductive logic is used to prove certain theories when we are making certain specific observations. So scientists make certain specific observations, and based on those observations they make an empirical statement which results into formation of theories. On the other hand, when we're talking about deductive logic, we're talking about using theories to make certain specific observations in real life. After these theories have been proven, they are used in specific observations or in specific situations to understand the reasons behind those situations or those observations. Let's come to certain important points after having understood deductive and inductive logic. Always use circles when you're uh, always use circles when you're solving questions related to Venn diagrams. Do not use squares or triangles as they tend to get more confusing. Always use circles. It becomes very easy when you use circles to solve these kind of questions in Venn diagrams. The idea of solving Venn diagrams is not to prove anything right, but to prove your answer choices as wrong. So what will happen in the exam is that you will be given certain statements. Based on those statements, you will be given certain conclusions, and you have to identify which of the following conclusions either follow from the statements or do not follow from the statement.
So if it is asking that which of the following conclusions follow from the statement, you don't have to prove that which statement follows. What you have to prove is that which statement does not follow. What I mean by saying is this is that when you pick up conclusion 1, you don't try to prove that this one follows from the statement, but you try to prove that this one is wrong or does not follow from the statement. If you are able to prove that this does not follow from the statement, then this is not your answer. But if you are not able to prove that this does not follow from the statement, then this becomes an answer for your question. This is how you follow and check all the conclusions to come to the right answer choices. So your method always has to be to prove your answer choices wrong. Third is ignore meaning of variables. You will always be given variables like dogs are cats. Now, in reality, it is not possible that dogs become cats, but you have to ignore the meaning of these variables and you have to give them certain letters in order to solve your answer. So, for example, dogs become D and cats become C. If you have another variable starting with cat, then you make it CA or CB. So this makes it easier for you to solve these questions without having getting confused in the meanings of those words. Fourth is represent variables by letters. This is what I've explained, and make certain combinations. We'll come to four combinations that we can make in order to solve our questions. Let's come to the first combination, when two variables have nothing in common. So the combination is when they have nothing in common. The example is no dogs are cats. This is represented in terms of Venn diagrams through the following. This is the circle of dogs and this is the circle of cats. Because no dogs are cats, there is no overlap between these two circles. So this circle and this circle has nothing in common. This is very easy to understand. There is nothing in common between two variables which are mentioned in the statement. So you draw it like this. Combination 2 says something in common, some dogs are cats. So in this combination you will draw something like this. Dogs and cats have something in common. So this is combination 1, then you can make a combination A that you can make in the combination number 2 which says something in common. The second sub combination that you can make here is some dogs are cats can also mean that all dogs are cats. So this will say all dogs are cats can also be drawn in like this, wherein dog is a subset of cats. So all dogs become cat become a reality. The third sub combination in this which can be made is all dogs are cats, wherein dogs and cats are equal to each other. So this means that dogs and cats are overlapping and there is no subset and no overset. This is combination number 3. And combination number 4 which can be made is when C becomes a subset of D. So this means that all cats are dogs becomes a reality. So C here is a subset of D. These are the four sub combinations that can be made when you're being talked about some dogs are cats or something in common between two variables. So you make all these four combinations and then you go on to solve the question. We'll understand how you utilize these four combinations. Right now just remember that when two variables have something in common, then these four sub combinations can be made. The next one is combination 3, wherein one is subset of another or equal to another. This says that all dogs are cats. So here it's very clear, dogs and cats are either equal to each other, wherein they are overlapping and there is no subset and superset. So all dogs are cats becomes very simple to solve. The second combination that can be made here is that dogs become subset of cats, wherein all dogs are cats is still a reality or is still possible, but all cats are dogs is not a possibility. In the second one, as you can see here, all dogs are cats. Dogs are subset of C, so all dogs are still cats, but all cats are not dogs in this Venn diagram. So the possibility of all cats as dogs is refused, wherein but all dogs are still cats in this Venn diagram. So these are the two combinations that you can make when you're talking about one subset being
one variable being subset of another or equal to another. This is done only when the word all is used, all and are. So all dogs are cats, a positive statement with the suffix of all uses these two subcombinations. Let's come to combination number 4, which says that something is not in common between two variables. So an example of this is some dogs are not puppies. So the speciality or the difference here is the word not. In the previous combination number 2, we had some dogs are puppies or some dogs are cats, but herein we have some dogs are not cats or some dogs are not puppies. So if we take it as some dogs are not cats, then the possible two subcombinations which can be made are, this is number 1, some dogs are not cats, wherein this is dogs, this is cat, and these here are the dogs which are not cats. So this means that there is at least one dog which is not a cat in this subcombination. In the second combination which can be made here is that no dog is a cat. So they will have nothing in common because they have some dogs which are not cats, which can also be understood as all dogs not being cats. So these are the two subcombinations which can be made when there is something not in common between two variables. Now let's come to the common mistakes that people make while solving these kind of questions. When you're solving all A or B, then A is a subset of B. We understood that we can have two subcombinations here where A is a subset of B and A and B are overlapping with no subset or superset. But a commonly made mistake is that when you confuse it with the fact that all B are A. Let's understand this. All A are B. This can either be represented in this manner or this can either be represented in this manner wherein all A are B and there is no super or subset and they are overlapping. But we cannot say that A is a super subset of A, B is a subset of A, and this becomes all B are A. So this cannot be confused with the statement all A are B. So this is wrong. This is a commonly made mistake when you are talking about all A's being B's. The second one is no A is B. We can also say no BEA. There is no confusion in this and no mistake because A and B have nothing in common and they are separate, and there is no commonly made mistake in this area because they are very clear. The third one is some A are B. Third one is some A are B. So a correct interpretation is some B are A because when you're talking about some A are B, the most commonly used Venn diagram is this, wherein they have something in common. But they can also mean that all A's are B's. We talked about this. We said that there are 4 subcombinations that can be made when you're talking about some A's being B's. So this is second subcombination which can be made, which says that all A's are B's. So in this scenario, this conclusion that some A are not B becomes wrong because here in this all A's become B's. Therefore, this is a wrong interpretation or a commonly made mistake when you're talking about some A's being B's. Remember that this is only specific to some A and B's being together. This is not about some A's not being B's. So when the word not is used, then it becomes different. Let's come to the fourth one with this. The fourth one says some A's are not B's. So a commonly made mistake here is some A are B. Some A's are not B's have two interpretations. One is this and the other is this. So when we're talking about the second combination, then this one becomes wrong because this says that some A are B, but in this subcombination there is no overlap or no commonality between A and B, so this becomes wrong, or this is a commonly made mistake. Second one is some B are not A. This this is a wrong interpretation because of the following Venn diagram. Some A are not B can also be represented as this, when all B's are A's because there are some A's right here which are not B's. So this says that some B are not A, but this subcombination proves this statement wrong. Therefore, this is also a commonly made mistake when you're talking about some A's not being B's.
Therefore, these are the following commonly made mistakes which you make in the examination. So it's important to understand all the sub combinations when you're talking about all these 4 kinds of statements that can be made. Practice examples, practice questions लेते हैं so that we understand how to solve these kind of questions. सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेन डायग्राम्स में से। वेन डायग्राम में नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आरबीआई में, जिसमें आपको 3 या 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी। उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे सब सडन कंक्लूजन्स विल बी गिवन, कुछ कंक्लूजन्स दिए होंगे और आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, या कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें देते हैं, इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, 3 कंक्लूजन दिए और हमको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। स्टेटमेंट्स देखते हैं। ऑल सन्स आर डॉटर्स, इसको किस तरह से करेंगे? ऑल सन्स को एस ले लिया, डॉटर्स को डी ले लिया, ऑल सन्स आर डॉटर्स, ये बन गया हमारा पहला वेन डायग्राम। नो डॉटर इज़ अ मदर, डॉटर का घेरा ये है, डॉटर का सर्कल ये है। नो डॉटर इज़ अ मदर मतलब मदर इसके बाहर आएगी। नो मदर इज़ अ फादर मतलब मदर और फादर में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो फादर और मदर अलग अलग रहेंगे। इसमें ये जानना ज़रूरी है कि डॉटर मदर में कुछ कॉमन नहीं है, फादर मदर में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि फादर और डॉटर में कुछ कॉमन नहीं है। हम फादर को इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आ गई। ऑल फादर्स आर एम्प्लॉयड, सारे फादर्स एम्प्लॉयड हैं, तो ई इसका सुपर सर्कल बन गया, सुपर सेट बन गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे फादर बनाते हैं तो ई हमारा ये बन गया। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो गई हमारे पास, या तो ये नंबर 1 पॉसिबिलिटी या ये नंबर 2 पॉसिबिलिटी। ये दोनों फिक्स हैं हमारे, ये दोनों इसी तरह से रहेंगे। सन्स, ऑल सन्स आर डॉटर्स एंड नो मदर इज़ अ डॉटर, ये यहीं के यहीं रहेंगे। ये फादर और एम्प्लॉयमेंट वाले जो घेरे हैं या सर्कल हैं, ये मूव कर सकते हैं। अब देखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ को याद कर लीजिए, एक पॉसिबिलिटी को हटा दीजिए जिससे कि आपको सॉल्व करना इजी हो जाए, लेकिन उसको याद रखिए क्योंकि वो पॉसिबिलिटी एग्जाम में और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी। कंक्लूजन देखते हैं। ऑल सन्स आर एम्प्लॉयड, ऑल सन्स आर एम्प्लॉयड, क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ, ज़रूर पॉसिबिलिटी है। ऑल सन्स आर एम्प्लॉयड अगर ऐसे हो सकता है, ई यहाँ पे आ गया और एफ यहाँ पे आ गया, नहीं, एफ ऑल फादर्स आर एम्प्लॉयड है तो एफ ऐसे आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी एक बन जाती है जिससे ऑल सन्स आर एम्प्लॉयड ठीक हो जाता है। दूसरी लेते हैं पॉसिबिलिटी, दूसरी क्या होती है? नो सन इज़ एम्प्लॉयड, नो सन इज़ एम्प्लॉयड भी पॉसिबिलिटी है, तो एफ हमारा और ई हमारा यहाँ है, सन इधर है, तो ये सही हो जाता है। और थर्ड है सम सन्स आर एम्प्लॉयड, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारी, क्योंकि हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एम्प्लॉयड यहाँ आ गया, फादर यहाँ आ गया, तो ऑल फादर्स आर एम्प्लॉयड एंड सम सन्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी ठीक हो गया। अब इसमें देखना ज़रूरी है किस तरह से हम सही आंसर को निकालेंगे। ये हमारा ठीक हो गया। ये देखिए, इसमें सम सन्स आर एम्प्लॉयड जो है थर्ड वाला स्टेटमेंट, ये ए को भी कवर करता है। हमने देखा था हैं सम एज आर बीस, तो हमारा पहला डायग्राम बनता है सम एज आर बीस और दूसरा डायग्राम बनता है ऑल एज आर बीस। तो सम एज आर बीस ऑल्सो मीन्स ऑल एज आर बीस। सिमिलरली सम सन्स आर एम्प्लॉयड ऑल्सो मीन्स ऑल सन्स आर एम्प्लॉयड। तो ये एक इसका सबसेट है जो कि एक पॉसिबिलिटी है जो कि हो सकती है, इसलिए हम इसको अगर कवर नहीं भी करेंगे तो भी हम इसको इनडायरेक्टली कवर कर रहे हैं थ्रू सी। देयरफॉर द आंसर वुड बी ईदर बी और सी। अगर हम इधर ए और बी और सी ले रहे हैं तो हम डुप्लीकेशन कर रहे हैं, बिकॉज ए तो ऑलरेडी सी में कवर्ड है, इसलिए ईदर बी और सी एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर बन जाएगा। इसका आंसर इसलिए होगा ईदर बी और सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें भी 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और 4 कंक्लूजन्स दिए गए हैं और हमको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। ये समझना इंपॉर्टेंट है, दोबारा कह रहा हूँ मैं कि हर कंक्लूजन को गलत प्रूव करना है। जो भी कंक्लूजन गलत प्रूव हम नहीं कर पाते हैं वो सही हो जाता है। एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं। ऑल गिटार्स आर ड्रम्स, ये सारे गिटार्स दिए हुए हैं। जीज एंड ऑल जीज आर ड्रम्स मतलब जीज बिकम अ सबसेट ऑफ ड्रम्स। ऑल ड्रम्स आर वायलिन्स, all drums are violins, so D becomes a subset of V. All drums become violins. No violin is a flute. There is nothing common between violin and flute, इसलिए flute बाहर आ जाएगा violin से टच नहीं कर सकता है। Most flutes are keyboards. ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूट जो है वो कीबोर्ड्स हैं, इसलिए इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। ये ऑल फ्लूट्स आर कीबोर्ड्स भी बन सकता है, सम फ्लूट्स आर कीबोर्ड्स भी बन सकता है। अगर ये सम फ्लूट्स आर कीबोर्ड्स बनेगा तो इसका एक और पॉसिबिलिटी है जो कि ये बन जाती है, जिसमें ये के है, कीबोर्ड्स है।
सम फ्लूट्स आर कीबोर्ड्स एंड सम वायलिन बिकम कीबोर्ड, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसको भी समझेंगे किस तरह से काम करेगा। देखते हैं कंक्लूजन्स क्या क्या दिए हुए हैं। ऑल कीबोर्ड्स आर वायलिन्स, ऑल कीबोर्ड्स आर वायलिन्स, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर हम कीबोर्ड और वायलिन को, कीबोर्ड को वायलिन के अंदर डाल देंगे तो फ्लूट कीबोर्ड से टच नहीं कर सकता, बिकॉज वायलिन और फ्लूट टच नहीं कर सकते। बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारी फोर्थ स्टेटमेंट दी हुई है मोस्ट फ्लूट्स आर कीबोर्ड्स, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ कॉमन है जो कि यहाँ पे प्रूफ गलत हो जाएगा। इसीलिए ये वाला जो हम स्टेटमेंट है इसको गलत प्रूफ कर चुके हैं, तो ये गलत हो गया। नो कीबोर्ड इज़ अ वायलिन, नो कीबोर्ड इज़ अ वायलिन, ये भी हम गलत प्रूफ कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, सम कीबोर्ड्स आर वायलिन्स एंड सम फ्लूट्स और मोस्ट फ्लूट्स आर कीबोर्ड्स, तो इसमें हमने दोनों प्रूव कर दिए, सम फ्लूट्स आर कीबोर्ड्स एंड नो कीबोर्ड इज अ वायलिन, इसको हमने गलत प्रूव कर दिया, इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नो फ्लूट इज अ वायलिन, नो फ्लूट इज अ वायलिन हमें साफ साफ दिया गया है कि नो वायलिन इज अ फ्लूट, इसका मतलब बनता है नो फ्लूट इज अ वायलिन ऑल्सो, तो ये सही हो गया। और फोर्थ है सम फ्लूट्स में बी गिटार्स, सम फ्लूट्स एफ में बी गिटार्स, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं बिकॉज वायलिन के अंदर फ्लूट नहीं जा सकता, इसीलिए फ्लूट गिटार के साथ भी कुछ कॉमन नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो जाता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, नो फ्लूट इज़ वायलिन। इस तरह से हम गलत प्रूफ करके निकाल सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही है और कौन सा गलत है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें भी 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और 4 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। सम पेन्स आर नॉट बुक्स, सम पेन्स, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इसमें हर जगह नॉट यूज़ किया गया है, ये डिफ़िकल्ट होते हैं, इनको समझना ही मुश्किल होता है। सम पेन्स आर नॉट बुक्स, तो इसको हम इस तरह से लेंगे, सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, तो हमारा डायग्राम सेम ही बनेगा लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। सम पेन्स आर नॉट बुक्स में ये वाला हमारा हो जाएगा जो कि बुक्स नहीं है। सम बुक्स आर नॉट नोटबुक्स, इसमें भी इसी तरह से बनेगा, एन को नोटबुक ले लिया, सम बुक्स आर देयर जो ये है विच आर नॉट नोटबुक्स। सम नोटबुक्स आर पैड्स, ये इजी हो जाता है, सम नोटबुक्स आर पैड्स, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिया गया है। एंड सम पैड्स आर स्केल्स, इसको पैड PAD लिख लेते हैं, और सम पैड्स आर स्केल्स, तो सम पैड्स आर स्केल्स में ये कॉमन एरिया बन गया हमारा, तो ये हमारा पूरा वेन डायग्राम बन गया। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, अगर हम इसको सर्कल में डाल देंगे, देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं हम इसको, एन ले लिया, एन के साथ ही पैड आ गया, पैड के साथ ये स्केल आ गया, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम बना पाएंगे, लेकिन हमने ईजीएस्ट कॉम्बिनेशन बनाया है उसको ही हम यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स को हमें गलत प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम बुक्स आर नॉट नोटबुक्स, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है सम पेन्स आर नॉट बुक्स, कुछ पेन हैं जो कि बुक्स नहीं हैं, मतलब ये कुछ एरिया है जो कि बुक्स का नहीं है, तो ऑल बुक्स आर पेन्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे क्या है, इसके दो स्टेटमेंट, इसके दो डायग्राम बनते हैं, पहला ये होता है सम पेन्स आर नॉट बुक्स, और दूसरा होता है अगेन सम पेन्स आर नॉट बुक्स बट हेयर ऑल बुक्स आर पेन्स, या फिर ऑल बुक्स आर पेन्स ये बन जाता है, लेकिन सम पेन्स आर नॉट बुक्स ये रियलिटी रहता है। तो अगर ये वाला डायग्राम हम लेते हैं तब तो ये सही चलता है, लेकिन अगर हम ये वाला डायग्राम लेते हैं तो ये गलत प्रूफ हो जाता है, इसीलिए हम इसको गलत प्रूफ कर पाए हैं थ्रू दिस डायग्राम, तो ये गलत हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने गलत प्रूव कर दिया एक डायग्राम के थ्रू। अब हम सेकेंड वाला स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं, सेकेंड कंक्लूजन लेते हैं। नो नोटबुक इज़ अ बुक, नो नोटबुक इज़ अ बुक, नोटबुक ये है और बुक ये है। हम यहाँ पे दिखा चुके हैं कि कुछ नोटबुक्स हैं यहाँ पे जो बुक्स हो सकती हैं, हमने यहाँ पे दिखाया कि सम बुक्स आर नॉट नोटबुक्स, ये भी हमने प्रूव किया यहाँ पे इस डायग्राम को बनाकर, लेकिन इसी डायग्राम में हमने ये भी दिखा दिया कि सम बुक्स आर नोटबुक्स, इसलिए नो नोटबुक इज़ अ बुक जो है हमने वो गलत प्रूव कर दिया इस डायग्राम के थ्रू, तो सेकेंड भी हमारा गलत हो जाता है। अब हम थर्ड की तरफ आते हैं। सम स्केल्स आर पेन्स, सम स्केल्स आर पेन्स, ये हम गलत प्रूव ऑलरेडी डायग्राम में खुद ही हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्केल्स हैं, यहाँ पे पेन्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये गलत हो जाता है। अब लास्ट वाला लेते हैं। सम पैड्स आर नोटबुक्स, सम पैड्स आर नोटबुक्स, यहाँ पे देखिए कॉमन है, कुछ पैड्स और नोटबुक्स में कॉमन है। और हमारा थर्ड स्टेटमेंट कहता है सम नोटबुक्स आर पैड्स, मतलब
नोटबुक्स और पैड्स में कुछ तो कॉमन रहेगा ही रहेगा हमेशा। हम कभी भी ये वाला डायग्राम नहीं बना सकते जहाँ पे नोटबुक्स और पैड्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है, सम पैड्स आर नोटबुक्स। इस तरह से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द ट्रिक इज टू यूज़ स्मॉल लेटर्स। सेकेंडली, टू प्रूव दी कंक्लूजन्स रॉन्ग, जो भी कंक्लूजन हम सही प्रूव कर पाएंगे, गलत प्रूव कर पाएंगे, वो कंक्लूजन हम बाहर निकाल देंगे, और जो हम गलत प्रूव नहीं कर पाएंगे वो हमारा आंसर चॉइस हो जाएगा। दिस इज हाउ वी डू वेन डायग्राम।